हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है मीनाक्षी और ये मेरा सेकंड मेकअप वीडियो है। जो पहला वीडियो था वो मैंने एसएमएस में किया था और एक्चुअली मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स से मुझे फीडबैक मिला कि मुझे वीडियो इंग्लिश या हिंदी में करना चाहिए कि सबको समझ में आ जाए, क्योंकि एसएमएस वीडियो सिर्फ एसएमएस फ्रेंड्स को ही समझ में आ रहा था, बाकी किसी को नहीं आ रहा था। एनीवेज, तो मैंने सोचा कि मुझे हिंदी में करना चाहिए, क्योंकि हिंदी हर कोई बच्चा बच्चा हर कोई समझ जाता है, तो फिर क्यों ना हिंदी, नो। तो तो दैट्स द रीज़न मैंने अभी सेकेंड वीडियो अपना हिंदी में किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और ये जो वीडियो है इट्स ऑल अबाउट दिस लुक जो मैंने आज क्रिएट किया है। और ये बिल्कुल ही सिंपल, बिल्कुल ही सोबर और डेली वेयर लुक है। ये कोई पार्टी में जाने के लिए नहीं है, ऐसे आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज़ इसमें मैंने बहुत ही फ्रेश कलर येलो यूज़ किया है आईज़ में, एंड बहुत सिंपल रखा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं आप लोगों का। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, आप प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। चलिए देखते हैं वीडियो फिर। मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपना हनी ड्यू प्राइमर ओपन करने का, बट वो मेरे से ओपन नहीं हुआ। फिर हम प्राइमर यूज़ करेंगे मेकअप स्टार्ट करने से पहले। अब हम यूज़ करेंगे कंसीलर जो बिल्कुल मेरे स्किन टोन का है। अब जो कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेरे स्किन टोन से काफ़ी लाइट शेड पे है। ग्रे कलर के आई शेडो से अपने आईब्रोज को फिल करूँगी।
अब मैं जितना हो सके उतना ब्लेंड करने की कोशिश करूँगी। सेम ब्राउन कलर लेके मैं अपने आईज के नीचे अप्लाई करूँगी। अब यूज़ करेंगे हम ये वाइट आईलाइनर। मैंने यहाँ पर लैक्मे का लिक्विड आईलाइनर यूज़ किया है। आप लोग कोई भी आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं अपने पसंद का। मैंने आर्टिफिशियल आईलैशेस अप्लाई किया हुआ है। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई सम फाउंडेशन। अब मैं कंसीलर यूज़ करके अपने फेस को थोड़ा शेप दूंगी। जितना मोटापा है उसको थोड़ा पतला दिखाऊंगी सबको।
अब मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज़ मेरा स्किन बहुत ऑयली है, स्पेशली माय टी जोन। Now I'll be using this translucent powder. अब टाइम है अपने चीक्स को थोड़ा सा पिंक करने का। ये मैं डार्क कलर का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा हाइलाइटर यूज़ करूँगी अपने नोज़ पे एंड चिक्स पे। फाइनली मेरा मेकअप कंप्लीट है। अब मैं ये मेकअप सेटिंग स्प्रे से अपने लुक को कंप्लीट करूँगी। Thank you for watching me. Love you. Bye bye.